My dear students, today we will be discuss about the electric potential due to an electric dipole. Consider an electric dipole consists by the two equal and opposite charge minus q and plus q, separate at a certain distance to a of center O. We calculate the electric potential at a point P of distance small r from the center of dipole makes an angle theta, where OP is equal to r, that distance, AP is equal to r1 and BP is equal to r2, our distance from minus q to point P and plus q to point P. The electric potential at point P due to the charge minus q, we know V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus q by r1. The electric potential at point P due to the charge plus q, V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r2. The net potential at the point P, V is equal to V2 plus V1, or V is equal to Q by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1, where V2 have negative sign convention and V1 have negative sign convention and V2 have positive sign convention. Then V is equal to V2 minus V1. Put the value of V2 and V1 and take the common Q by 4 pi epsilon naught. So we get V is equal to Q by 4 pi epsilon naught into 1 by R2 minus 1 by R1. Next, from the triangle OAP, R1 square is equal to R square plus A square plus 2AR cos theta, according to parallelogram method of vector addition. The R1 square is equal to R square plus A square plus 2AR cos theta. R2 square is equal to R square plus A square plus 2AR cos 180 माइनस थीटा. एंड अगर ये एंगल थीटा होगा तो रियल होगा कि ये एंगल जो है 180 माइनस थीटा. देन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा, वेयर cos 180 minus theta is equal to minus cos theta, and R2 square is equal to R square plus A square minus 2AR cos theta. इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा. R1 square is equal to I square
into 1 plus a square by r square plus 2ar cos theta, where r square taken the common in this equation, just like r2 square is equal to r square into 1 plus a square upon r square plus 2 minus 2a upon r square into cos theta r. If a is less than r square r, then a square upon r square is very less than 1. So a square by r square is neglected. In r, from the value of r1 and r2 जो a square by r square की value जो very small or very less than 1, then we can neglect it, the a square by r square. Then r1 square is equal to r square into 1 plus 2a upon r into cos theta, and r2 square is equal to r square into 1 minus 2a upon r cos theta. R1 is equal to r into 1 plus 2a upon r cos theta power 1 by 2. R2 is equal to r into 1 minus 2a upon r into cos theta power 1 by 2. Then 1 by r1 is equal to 1 by r into 1 plus 2a upon r cos theta power minus 1 by 2. और 1 by r2 is equal to 1 by r into 1 minus 2a upon r cos theta power minus 1 by 2. Put the value of 1 by r1 and 1 by r2 in equation first. R1 by r1 and 1 by r2 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. फिर v इज इक्वल टू q by 4 pi of silent नॉट एंड टू 1 by r कॉमन ले लीजिए दोनों. 1 plus 2a by r cos theta power 1 by minus 1 by 2 minus 1 minus 2a by r cos theta power minus 1 by 2 r. v is equal to q by 4 pi of silent naught into 1 by r. According to binomial theorem, we write 1 minus a by r cos theta minus 1 plus a by r cos theta are according to
बाइनोमियल थ्योरम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। ये आपको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो प्लस माइनस में चेंज होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - a/r cos थीटा, और यहाँ पर जो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/r cos थीटा। आर मतलब कि +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है माइनस हो जाएगा। माइनस में v = q/4πε0 इंटू 1/r इंटू 2a -2a अपन r इंटू cos थीटा, और v = 1/4πε0 2qa अपन r² इंटू cos थीटा, where 2qa = p moment of dipole और v = 1/4πε0 p cos थीटा अपन r²। It is formula of electric potential due to an electric dipole at any point P. अब v = 1/4πε0 p cos थीटा अपन r²। अब स्पेशल कंडीशंस, इसमें फर्स्ट कि फॉर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन थीटा = 0, r cos 0 = 1, और v = 1/4πε0 p cos 0 अपन r², और v = 1/4πε0 p/r²। सेकेंड, इन इक्वेटोरियल पोजीशन ठीक है, थीटा = 90 डिग्री, cos 90 = 0, और v = 0। Say in other words, the electric potential at any point in equatorial position due to an electric dipole in 0। मतलब आप इक्वेटोरियल पोजीशन में जैसे कि taken an electric dipole consists by the two equal and opposite charge separate at a certain distance 2a of center O, and taken a point P in equatorial position of distance r, then the distance between distance of point P for the minus and plus q charge have the equal magnitude। तो दोनों के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू सेम होगी, तो देन V1 = V2, देन V1 - V2 = 0। तो आप प्रूफ भी करोगे तो इसको 0 आएगा, या यहाँ से आप डायरेक्टली भी cos 90 थीटा की वैल्यू 90 पुट करके जो है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए फाइंड किया जा सकता है। जस्ट लाइक इन एक्सियल पोजीशन के कि टेकन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूटेड बाय द टू इक्वल एंड opposite charge of center O separate at a certain distance 2a। अब we calculate क्या we find the electric potential at a point P in axial position of distance small r from the center। तो फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी v = 1/4πε0 2p/r²। जस्ट कि
माइनस क्यू से जो है पॉइंट पी का डिस्टेंस जो होगा आर माइनस ए हो जाएगा, और प्लस क्यू से जो है डिस्टेंस जो होगा आर प्लस ए, और यहाँ से आप फिर वही V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू काउंट करके जो V1 माइनस V2 कर दोगे तो लास्ट में आपका आ जाएगा कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²।